Welcome back to our lecture series of complex analysis. In this lecture, we will discuss differentiability of complex functions. In the previous lecture, we discussed continuity. Now, since we have the concept of continuity, so it is okay to discuss the branch point, and branch cut. Okay. So, see, when we have multi-valued function, then there is a set of images for a single input. Okay. So जैसे कि अगर हमारे पास एक फंक्शन है f set that is z to the power 1 by n, that is nth root of a complex number z. तो यहाँ पर for each input z we have n values, n images you can say, and each one you can say n values की वजह से we call this function as multi-valued function. Now we want to have a discussion for this nth root of a complex number, but इनमें से हम कौन सी वैल्यू को यूज़ करें. ओके क्योंकि मैथ्स में डिस्कशन तो हमेशा यूनिफॉर्म ही रहता है, तो उसी यूनिफॉर्म को मेंटेन रखने के लिए देयर इज़ अ डिस्कशन ऑफ ब्रांच. नाउ लेट मी डिफाइन कि ब्रांच क्या होता है, देन वी विल कम टू द ब्रांच कट एंड देन ब्रांच पॉइंट. ओके, सो डेफिनेशन, and this definition will define the branch. So a branch of a multi-valued function f is a function f1 that is continuous. This is important word, continuous on some domain, and that assigns exactly one value, one of the multiple values of f to each value of z. Okay, to each point z in that domain. ओके तो जितनी भी ब्रांचेस हैं उनमें से वी विल आइडेंटिफाई कंटिन्यूस फंक्शन जो जिसकी वैल्यू उस कैपिटल एफ फंक्शन के अकॉर्डिंग ही है, और दूसरा ये है कि वो सिंगल वैल्यू को असाइन करेगा फॉर एवरी इनपुट सेट. ओके, सो नाउ वी हैव अ टिपिकल नोशन ऑफ फंक्शन, क्योंकि मल्टी वैल्यूड फंक्शन तो हमारी फंक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फंक्शन ही नहीं है, राइट? So basically out of many images we are just fixing only one value. Okay, now the moment we have the discussion of branch, तो हमारे सामने ये क्वेश्चन है कि हम इसको किस तरीके से अलग करेंगे. जैसे फॉर एग्जाम्पल we had discussion of the principal square root function f of z equals to z to the power 1 by 2, where this z equals to, where this is equals to square root of modulus of z and e to the power iota प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ z बाई 2. तो ये डिफाइन करता है प्रिंसिपल स्क्वायर रूट फंक्शन को. हमने इस फंक्शन के लिए देखा था कि दिस फंक्शन वाज नॉट कंटिन्यूस एट दिस फंक्शन, और इसके लिए हमने दो अप्रोचेस भी यूज़ की थी. ठीक, जो डिस्कशन हमने -1 के लिए किया है, द सेम डिस्कशन कैन बी डन फॉर -2 ऑल्सो, सेम डिस्कशन कैन बी डन फॉर -3 ऑल्सो. यहाँ पर हम फिर से इस तरीके का सर्कल ले लेंगे, है ना. तो हम क्या कह सकते हैं, दिस प्रिंसिपल स्क्वायर रूट फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस एट एनी ऑफ दिस नेगेटिव वैल्यू. ओके, जैसे हम यहाँ पर भी बात कर सकते हैं, यहाँ पर भी बात कर सकते हैं. तो हम ये कह रहे हैं कि हम इन सारी ब्रांचेस या फिर सारी इमेजेस में से वो वैल्यू आइडेंटिफाई करेंगे जिसके लिए हमारा फंक्शन कंटिन्यूस है ना. दिस वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो जिस वैल्यू के लिए कंटिन्यूस है
उन्हीं वैल्यूज़ के लिए हम f को डिफाइन करेंगे। तो हमें एक ऐसा डोमेन आइडेंटिफाई करना है जिसकी हर एक वैल्यू पर हमारा फंक्शन जिसको हम ब्रांच बनाने वाले हैं, उस पर कंटीन्यूअस रहे। तो अगर हम इस प्रिंसिपल स्क्वायर रूट फंक्शन की बात करें तो ये किसी भी नेगेटिव रियल नंबर पर कंटिन्यूअस नहीं है। तो इसका मतलब अगर हम इस पूरे एफ जेड के इस डोमेन में से अगर इसको एक्सक्लूड कर दें तो जो भी रिमेनिंग हमारा डोमेन बचेगा उस पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, राइट। सो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट दैट सपोज if we come to this discussion that suppose this is our complex plane and we are removing this only, ओके हमने इसको रिमूव कर दिया है और इस नेगेटिव रियल एक्सिस के अलावा जितना भी कॉम्प्लेक्स प्लेन है वहाँ पर हम हर एक वैल्यू को उसको यूज़ कर सकते हैं एज ए इनपुट, राइट। तो इसका मतलब अब जो हमने नया फंक्शन डिफाइन किया है उसके अंदर जो भी डोमेन डिसाइडेड है उस पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। सो दैट वी डू मीन बाय कंटिन्यूटी ऑफ द ब्रांच, ओके। सो अगर हम इसको एक्सक्लूड कर दें तो इसको एक्सक्लूड करने का मीनिंग क्या है कि हमारा थीटा की जो वैल्यू है वो माइनस पाई से पाई के बीच में ही रहनी चाहिए। दिस इज माइनस, जब हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस पाई से पाई के बीच में ही रहनी चाहिए। सो दिस टाइम वी आर नॉट इंक्लूडिंग द पाई, okay, so how we can define the branch then? One branch of fz is, how can we define that? That is f1 of z, that is equals to z to the power 1 by 2, and that is equals to square root of absolute value of z e to the power iota argument ऑफ z बाई 2, राइट। और यहाँ पर ये जो भी थीटा रहेगा, लेट मी कॉल दिस थीटा इन प्लेस ऑफ आर्ग्यूमेंट, सो लेट दिस बी थीटा, ओके। नाउ दिस थीटा इज गोइंग टू बी रेस्ट्रिक्टेड, सो यू कैन सी अब थीटा कभी भी ये लाइन बनेगा ही नहीं, चाहे हम नेगेटिव डायरेक्शन से आ रहे हैं या फिर पॉजिटिव डायरेक्शन से आ रहे हैं, कभी भी थीटा ये वैल्यू नहीं आएगा। इसका मतलब इस एक्सिस पर जितने भी पॉइंट्स प्रेजेंट्स थे उनको हमने एक्सक्लूड कर दिए हैं फ्रॉम द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। अब इस फंक्शन का डोमेन क्या है? कंप्लीट कॉम्प्लेक्स प्लेन एक्सक्लूडिंग दिस नेगेटिव रियल एक्सिस। तो अब इस डोमेन पर हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है, और अगर ये कंटिन्यूअस है और हम केवल थीटा की ये वैल्यूज यूज कर रहे हैं तो इस केस में दिस विल डिफाइन अ सिंगल वैल्यूड फंक्शन, ठीक है। सो फॉर दिस रेंज ऑफ थीटा f1z is continuous and also f of z is equal to f1z, that is कि जो जो इस कैपिटल एफ जेड की वैल्यूज थी वो ही इस f1z की है, एंड ऑल्सो दिस इज इक्वल फॉर theta lying between these values, okay। So therefore we can say therefore f1 is a branch of fz, okay, you can write fz, ठीक है। So this is about the branch of a multi-valued function. Now let me tell you the branch cut। जैसे कि हमने इस लाइन को जब एक्सक्लूड किया तो उस केस में अब जो रिजल्टेंट फंक्शन है या फिर जो रिजल्टेंट डोमेन है उस पर हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो इस तरीके के जिनका एक्सक्लूजन हो रहा है दैट विल डिफाइन द ब्रांच कट, ओके। सो नाउ द नेक्स्ट डेफिनेशन इज अबाउट ब्रांच कट। Definition is branch cut. So a branch cut, for a branch। तो हम किसी ब्रांच के लिए ब्रांच कट डिफाइन करते हैं f1 of a
multi-valued function f is a of portion of a curve that is excluded from the domain of capital F, so that our function f1 becomes continuous, so that f1 is continuous on the remaining points. Okay, so whatever we are excluding to make this f1 continuous, that exclusion is known as branch cut. So in this discussion, this red line is branch cut. Okay, so this is our branch कट. ठीक है. नाउ कोई ऐसा पॉइंट हो सकते हैं जो कि हर एक ब्रांच कट पर अवेलेबल हो, तो इस तरीके के जो पॉइंट्स होंगे वो ब्रांच पॉइंट होंगे. ओके, सो द नेक्स्ट डेफिनेशन इज अबाउट ब्रांच पॉइंट. दिस इज ब्रांच point. Okay, a point with the property that it is on the branch cut of every branch of multi-valued function fz is called a branch point. Okay, so this is about the discussion of branch point and branch cut. जैसे जैसे हम आगे एनालिटिक फंक्शन और इंटीग्रेशन की तरफ जाएंगे, ये डिस्कशन और भी हमारे लिए क्लियर होता जाएगा. ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट द डिस्कशन ऑफ डेरिवेटिव्स. डेरिवेटिव, so what do you mean by derivative? Okay, so let f be a continuous function whose domain of definition contains a neighborhood of z naught, that is z minus z naught is less than epsilon of a point z naught, then the derivative of f8 z naught is the limit, which limit z tends to z naught f of z minus f of z naught over z minus z naught if exist. ठीक है, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तब हम इसे ही फंक्शन का डेरिवेटिव बोलते हैं. ठीक है, एंड डिनोटेड बाय
denoted by f prime z naught. That is, we write the derivative of a function f8 z naught as f prime z naught equals to f of z minus f of z naught over z minus z naught, and where the limit is tending to z naught. ओके, और जब ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही होती है तब हम कहते हैं फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है और फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट द पॉइंट z नॉट. ओके, अब हमारे पास इसकी कुछ अलग फॉर्म्स भी हैं. सो लेट मी राइट दीज अदर फॉर्म्स. सो सम अदर फॉर्म्स. ठीक है, सो फर्स्ट है, इफ वी राइट लेट this delta z is equals to z minus z naught. Okay, obviously if z is tending to z naught then z is not equal to z naught. उस केस में this delta z is not equal to 0, which implies this z equals to z naught plus delta z. Now if we substitute these values into this, then this derivative will be then the derivative of f8 z naught is given by f dash z naught is equals to limit. In the previous one, z is tending to z naught. Now if z is tending to z naught, then this difference is going to be 0, and that difference is del z. So we can write this del z is tending to 0. Now our function was f of z. Now z can be written as z naught plus del z. So we can write del z naught plus del z minus f of z naught over del z. राइट, दैट वाज z माइनस z नॉट. तो इसको हमने z del z से रिप्रेजेंट कर दिया. सो दिस इज एन अनदर फॉर्म फॉर द डेरिवेटिव और द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट z. राइट, नाउ वी हैव another form. So let this del w is the difference of this function z plus del z minus f of z. ठीक है, which denotes the change in the value w equals to f of z. ओके, हम ये हर बार यूज करेंगे. ओके, ऑफ f corresponding to a change del z in the point at which f is evaluated. ओके, अब क्योंकि हमने ये देखा है कि किसी चेंज के रेस्पेक्ट में दूसरे चेंज को आइडेंटिफाई करना, दैट इज सम सेंस ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी. सो वी कैन से, सो वी कैन हैव that dw over dz, that is the limit del z tends to 0 and then del w over del z. So this is in another representation where we use the typical definition of differentiability. ठीक है, now let us simplify some question and then we will come to the some theorem also. Okay, so first of all we have example 1 and it says discuss
the differentiability of the function एफ जेड इक्वल्स टू वन बाई जेड। ठीक है, हमें पता है इसका डेरिवेटिव होता है माइनस वन अपॉन जेड स्क्वेयर। सो वी विल आइडेंटिफाई कि इज माइनस वन अपॉन जेड स्क्वेयर कैसा होता है यूजिंग दिस डेफिनेशन। ओके, हियर यू कैन सी दिस इज द लिमिट। तो लिमिट के एग्जिस्टेंस के लिए अगेन यू कैन यूज द एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन। तो डिफरेंशियबिलिटी के लिए भी वी हैव द एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन। ओके, सॉल्यूशन। और एक बात और जो आपने नोटिस की होगी, जैसे हमने लिमिट को किसी एक पॉइंट पर डिफाइन किया था, देन इन द लास्ट लेक्चर वी डिफाइन द कंटिन्यूटी एट अ स्पेसिफिक पॉइंट। नाउ in a similar way we are defining the differentiability of a function at a specific point. That means limit, continuity and differentiability all are point based concept. ओके, तो जब भी हमें डिफरेंशियबिलिटी डिस्कस करनी है देन वी लुक फॉर दी पॉइंट कि हमें किस पॉइंट पर डिफरेंशियबिलिटी शो करनी है। ओके, और अगर किसी डोमेन के लिए हमें डिफरेंशियबिलिटी, कंटिन्यूटी या फिर एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट बताना है तो हमें पॉइंट के हर एक पॉइंट पर इन तीनों कंसेप्ट के एग्जिस्टेंस की बात करनी होती है। ठीक है, सो लेट मी राइट दिस डेफिनेशन and then we will discuss the differentiability of this function. Okay, so we have dw over dz is equals to the limit del z tending to 0 del w over del z. So if we examine this, then can we identify this limit? So since this, so and what about del w over del z, that is equals to, this is f of z plus del z and then minus f of z, right? So this is equals to 1 upon del z f of z plus del z minus f of z. Okay, and that will be equals to 1 upon z plus del z minus 1 upon z and then multiply it by 1 upon del z. So that is equals to, if you take the LCM of these two, so you will have that 1 upon del z, then you will have z times z plus del z and then you have this is z minus del z, right? So you will have z plus and minus z then minus del z. So you have z minus del z. Now this will be 0 and this will be cancelled out by this one. So you will have minus 1 upon z plus del z. ओके, अब हमें ये पता है कि इसके एग्जिस्टेंस के लिए वी मस्ट हैव दैट z is not equals to 0. Okay, now to w naught over del z, now to this to be defined, we must have that z is not equals to 0. अगर z इक्वल्स टू 0 है तो उस केस में इसका लिमिट का एग्जिस्टेंस होगा ही नहीं। ठीक है, सो वी मस्ट हैव z इज नॉट इक्वल टू 0। सो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, यू कैन से, और आई विल राइट एट द एंड ऑफ दिस सॉल्यूशन। सो फॉर z is not equal to 0, dw over dz is equals to the limit of del z tending to 0 and del w over del z. Now we can use this value in place of these. So we can write this is equals to limit del z tends to 0 minus 1 upon z times z plus del z. Okay, now if del z is tends to 0 then this will be minus 1 upon z square. Okay, so you can say thus the derivative of this function f dash z is equals to minus 1 upon z square when z is not equals to 0 and does not exist when z is equals to 0.
So this function is differentiable for all non-zero complex number, but not differentiable for zero complex number. Okay.